अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में जाएंगे तो यू रन इनटू ट्रबल। अब 2 में देखें, डिक्लेयरिंग दैट एनी एक्ट डन और प्रोसीडिंग टेकन विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ना ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में, इट्स नॉट द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में जाएंगे ना तो इट विल कट बोथ वेज। बाय अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, they'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province, they'll say we don't do this either, we don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम स्ट्रिक्ट टू सेंस में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है इसका। how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your ownership impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें, थोड़ा सा जल्दी करें। बस जल्दी कर देता हूँ। अब बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी। My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been... ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो, आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज। जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ भाई, राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट। कोई डिनाई नहीं कर रहा है आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा। राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल। व्हाई ए पर्सन's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP... Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship want to suffer the consequences. I should conclude early so that... Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. By and again... But ये allegation आपने नहीं लगाया। देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance
all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed a case under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested the election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर who turns against his party, तो क्या वो पार्टी उसको रखने की देखें, he is not running against it. He is saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी तो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority, but subsequently with a lapse of time they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he come a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं आप कहते हैं नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट अस. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फला पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे. मैं मेराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. तो आपकी पार्टी में आ गए. He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना. अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में, कम से कम आप उनको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना.
क्यों एक मतलब इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है, इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, हम ये बात बार-बार सुन चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल, आगे खान साहब वी हैव हर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें, 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का, कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, हम कब मना कर रहे हैं। अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए उसके तहत। सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको, क्यों छोड़ें हम भाई, वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है। अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को। सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट he has been expelled. आप दिखाइए ना, मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है। वो तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि तो आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आप ये कहने से बस काफी है, काफी है। पार्टी से नहीं, अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट टर्मिनेशन। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। दैट इज समथिंग टू बी डिसाइडेड by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my no? You should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा। No, you don't prove a negative. You prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party हो फिर को मैं ही डिनाई कर रहा हूँ, तो देखिए सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा ना। सेल्फ सर्विंग नहीं, ये चलिए खैर आगे बढ़े। We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली। Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी, do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड has to be the same.